हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अनबॉक्सिंग। टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा, दिस इज द अनबॉक्सिंग ऑफ द मोटोटेक वाटरप्रूफ टूरिंग बूट्स। तो आज मैं इसको अनबॉक्स भी करने वाला हूँ आपके सामने एंड आल्सो आई एम गोइंग टू टेस्ट इट आउट हाउ इट वर्क्स। इसके पहले आई यूज्ड टू यूज द बाइकिंग ब्रदरहुड वाटरप्रूफ राइडिंग बूट्स, जो कि टूरर वाटरप्रूफ राइडिंग बूट्स, एंड आई हैव यूज्ड इट फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 2 years। अगर बाइकिंग ब्रदरहुड गियर की वाटरप्रूफ टूरिंग बूट्स है, उसकी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी लेट्स गो अहेड एंड अनबॉक्स दिस मोटोटेक स्टफ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मोटोटेक स्टफ क्योंकि बाइकिंग ब्रदरहुड आई ब्रॉट इट एट द प्राइस ऑफ अराउंड 6500, बट ज्यादा दिन में उसको यूज नहीं कर पाया। हार्डली एज आई सेड 1.5 years, a little more than 1.5 years in fact. So yeah, this is my motoTek riding boot. Boot looks pretty good. There is nothing else in this box, so let's just throw it away for now. This is the boot, as you can see, and the price of this boot is 9,750. You can buy them directly from mototek.in or from amazon.in. There are a lot of websites selling these waterproof boots, but I brought them from customelements.in because the guy at Custom Elements was very helpful. In fact, visit their websites customelements.in. वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे और भी टूरिंग बूट्स का ऑप्शन मिलेंगे, बट आई स्पेसिफिकली वांटेड वाटरप्रूफ टूरिंग बूट्स, तो इसीलिए द गाय देयर हेल्प मी आउट अ लॉट एंड दैट्स व्हाई आई बॉट इट फ्रॉम customelements.in. वैसे प्राइस तो हर जगह पे एक ही है। So going by the build of this boot, definitely this is a very well built boot. वो तो हर राइडिंग बूट ही होता है। I mean only after you use it for a few years then you get to know how well it is. For example, अगर मेरे हिसाब से कहो, I brought that biking brotherhood की touring boots for around 6,500 around 2 years back, as I said, but then I would say they are not worth it because वो पूरा फट चुका है। ठीक है, आप अगर मैं देखोगे वाइजैक के टाइम से मैं वो बाइकिंग ब्रदरहुड का बूट्स यूज कर रहा हूँ। So anyways, I will definitely give you a long-term review of these motoTek waterproof boots, but first, before going ahead, I will dip them in water and check if they are actually waterproof. क्योंकि आगे आने वाले ट्रिप में मुझे ये वाटरप्रूफ बूट्स बहुत काम आने वाला है। Going by the build and protection, the boots are pretty well built, as you can see here, pretty well built boots. There is a zipper here, and then the boot spreads out completely, making it easier for you to wear it. And also there is a velcro here. यार velcro यहाँ पे है तो waterproof lining से ज़्यादा ऊंचा तक नहीं होगा। I mean that means the boots are waterproof up to this height only. If the velcro starts at this height, the waterproof level is up to this height only, which means इतना height तक water crossing हो गया तो I don't think these boots will be able to help you. In BBG that was not the case. BBG was completely waterproof up to this point. उनका velcro के बाद there was another level of chain. So like you can see the chain here. I mean this design definitely makes it easier and comfortable to wear, which I can understand pretty well. चलो पहले तो पहन के देखते हैं। So as you can see, ये मैं just trial purpose के लिए पहन के देख रहा हूँ if the size is okay or not. So size is definitely okay. The other one, only after checking if it's completely waterproof, because it isn't guaranteed that this boot is completely waterproof. If not, then I can definitely return it back to Custom Elements. That's what they said. So yeah, boot has definitely good protection. There is a steel toe kind of thing here, which matters, which is the actual protective thing for boots. Yeah, as you can see, fits me perfectly. हाँ, शुरू में walking becomes a little bit of trouble because you have to break in the riding boots. The boots are pretty stiff right now, so I'll tell you what I plan to do. I have planned to dip these boots into a tub of water for around 2 minutes. उसके पहले ये toilet paper के कुछ paper rolls I'm going to just put them in, just to ensure कि ये waterproof thing works perfectly. Because you know, if the boot is defective, I want to get it replaced. तो आप अभी देख सकते हो इसके अंदर there are quite a few paper napkins और toilet paper rolls. तो ये बहुत जल्दी पानी सूस लेता है। नेक्स्ट स्टेप, सीरियसली बाल्टी भर पानी ही चाहिए इसको टेस्ट आउट करने के लिए। तो लेट्स डिप आवर टॉयलेट पेपर फिल्ड बूट्स इनसाइड दिस बाल्टी। लेट मी सी द लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर इस लेवल से नीचे ही रहना चाहिए हमेशा पानी। आई डोंट थिंक आई हैव गिवन दैट मच ऑफ वाटर इनटू दिस। आई विल डिप देम फॉर अराउंड 2 minutes or so. Alexa, start timer for 2 minutes. 2 minutes starting now. Yeah, it's something you need to hold patience for, because you see these riding boots are not at all less costly. I mean 9,750. These are the costliest shoes I have purchased till date. This is personally I'm talking about myself. And then if the waterproof part of them does not work, which is the main reason why I purchased them, I'm at a total loss, right?
इससे बेहतर तो मैं गम बूट पहन लेता 500 रुपए वाली जो ले से मैंने खरीदा था लास्ट टाइम। ले में पानी चला गया था बीबीजी पे, क्योंकि बीबीजी बूट्स पर कंप्लीटली वाटरप्रूफ, बट देन वो वाटर क्रॉसिंग लेवल इतना हाई था कि इसके ऊपर से पानी चला गया अंदर, ठीक है। सो दैट वाज टू मच। सो आई वुड टेल यू दैट ओके देयर Alexa saying 2 minutes is complete. So इसको चेक करेंगे। Let us keep it aside for now. Let's check the other boot. Okay, so 2 minutes over for this boot as well. To ensure that these boots are completely dry, I will push the paper inside. एकदम अंदर तक पेपर घुसा के देखेंगे। अभी पेपर, taking out the paper for the left shoe. The paper is completely dry. इसको छोड़ दो, ये नीचे गिर गया। The paper is completely dry, but it says that the left shoe is okay. Let's check the right shoe. Okay, the right shoe is also completely dry, which means my Mototech boots are absolutely fine. That's about the unboxing testing of the Mototech waterproof boots. If you are going to buy this boot, I will drop the links in the video description to the cheapest place where these boots are available. If you like this video, guys, do not forget to hit that thumbs up button, and if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching.